સબસ્ક્રાઇબ કરો શિમારું ગુજરાતી ચેનલને, પછી YouTube એપ પર બેલનું બટન દબાવો અને શિમારું ગુજરાતી તરફથી નવીનતમ માહિતી મેળવો. नमस्कार दोस्तों, वोकल फॉर लोकल के आज के नए एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है. मैं हूं स्मित सागर और आज के हमारे इस एपिसोड में हम वोकल फॉर लोकल के साथ ईट लोकल के मुहिम के बारे में भी बात करेंगे. ईट लोकल, वेल क्या है ये ईट लोकल? दोस्तों, ह्यूमन बॉडी के वातावरण और उनके सराउंडिंग होने वाले हार्वेस्ट से सीधा संबंध है. मतलब किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले अनाज वहां पर बसने वाले लोगों की बॉडी को ज्यादा सूट करता है. दूसरा, लोकल हार्वेस्ट को आपकी थाली तक पहुंचाने के लिए कम समय लगता है, जिससे कि उनकी पौष्टिकता बरकरार रहती है. और ईट लोकल से लोकल किसान भाइयों, व्यापारियों को भी फायदा मिलता है. तो देखा जाए तो ईट लोकल का वोकल फॉर लोकल से डायरेक्ट संबंध है. Tata presents Vocal for Local, co-presented by Atomize. Never compromise. तो आज के हमारे वोकल फॉर लोकल के एपिसोड में हम ईट वोकल का महत्व समझाते हुए हम बात करेंगे रेटियो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस शीतल मैम से. तो चलिए. નમસ્તે. દેશી જેનું ઉપનામ છે અને સ્વદેશીપણું જેના પાયામાં છે એવી રેટિયો દેશી તુવેર દાળની સ્થાપના 1935માં નવાપુરમાં થઈ. નવાપુર એટલા માટે કે અહીં નેચરલ મેથડથી ફાર્મર્સ આજ દિન સુધી તુવેરનો પાક લે છે. ઘણાને એમ થાય કે તુવેર દાળ અને રેંટિયો કે જે ટિપિકલી ગુજરાતી વર્ડ છે એને શું લેવા દેવા. ત્યારે આજે મને કહેવાનું મન થાય છે કે રેટિયો તુવેર દાળના સ્થાપક શ્રી મંગળદાસ ચોખાવાળા કે જેઓ મહાત્મા ગાંધીજીના ફ્રીડમ મૂવમેન્ટથી ઇન્ફ્લુઅન્સ્ડ હતા અને રેટિયો કાતવો એ એમનું ડેઇલી રિચ્યુઅલ હતું. તો જ્યારે બ્રાન્ડ નેમ આપવાનો વારો આવ્યો ત્યારે એમને જે કંઈક સૂઝ્યું તે ફક્ત ને ફક્ત એટલે કે રેંટિયો દેશી તુવેર દાળ. હાઉ રેંટિયો ઇઝ ડિફરન્ટ દેન અધર દાલ્સ. એના કરતાં મને એવું કહેવાનું ગમશે કે રેંટિયોમાં એવું શું છે કે જેને લોકોનો જનરેશન્સથી આટલો બધો પ્રેમ મળ્યો છે. રેંટિયો એ 100% કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શનમાં બિલીવ કરે છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, whether it is consumer, whether it is retailer or whether it is another channel partner. કોઈની પણ ફરિયાદ અમારા એમડી શ્રી વિપિનભાઈ ચોખાવાલા એ જાતે કેટર કરે છે અને બીજું કંઈક થાય કે નહીં થાય ડેલી વેધર દેર ઇઝ એની કમ્પ્લેન ઓર નોટ એ ચેક કરવું એમનું પહેલું કામ છે. અને રેંટિયોમાં બધા જ ફેમિલી મેમ્બર્સ એમ માને છે કે કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન જ આપણો એકમાત્ર ધ્યેય છે. સેકન્ડલી, રેંટિયો એ ડ્રાય પ્રોસેસથી બને છે. ડ્રાય પ્રોસેસ એટલે કે વિધાઉટ યુઝિંગ અ સિંગલ ડ્રોપ ઓફ વોટર. એ નેચરલ સનલાઇટનો જેમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ તરીકે, અને એને લીધે તુવર દાળના જે ઇનબિલ્ટ ન્યુટ્રિશન કહીએ કે ઇનબિલ્ટ એની ફ્લેવર કહીએ એ બરકરાર રહે છે. અને રાંધ્યા પછી જે એની સોડમ અને જે એની સરી આપણે કહીએ એ એવી ને એવી રાખવામાં આ ડ્રાય પ્રોસેસ ખૂબ મદદરૂપ થાય છે. ત્યાર પછી આગળ જો કહું તો રેંટિયો ફક્ત ને ફક્ત દેશી તુવર દ્વારા બનાવવામાં આવે છે, જે આજે 85 યર્સથી એનો
જે પ્રથા રહી છે એમાં કોઈ પણ જાતનો હજુ સુધી બદલ થયો નથી. 1 કિલો 2 કિલો 5 કિલો જે વખતે ફક્ત 100 કિલોની ગુણીમાં દાળ આવતી તે વખતે રેડિયોએ પાયોનિયર છે નાના પેકિંગને માર્કેટમાં મૂકવા માટે. કારણ ફરીથી એ જ વાત આવે છે કે નાના પેકિંગ હશે તો કન્ઝ્યુમર એને જાતે જોઈ શકશે કે આની ખાસિયત શું છે અને એનું સેટિસ્ફેક્શન એ આપણી પ્રાયોરિટી છે. માટે રેન્ટિયો ઇઝ યુનિક. રેન્ટિયોને એના ગ્રાહકોનો ખૂબ પ્રેમ મળ્યો છે. માટે જ ફક્ત ને ફક્ત તુવર દાળમાં ડીલ કરીને પણ રેન્ટિયો આજે એ જ ઉત્સાહથી કામ કરે. વેન વી ટોક ઇન ટર્મ્સ ઓફ ગ્રોથ, એ હંમેશા ક્યાં તો અમાઉન્ટમાં જોવામાં આવે છે, ક્યાં તો કેજીસમાં જોવામાં આવે છે. પણ રેન્ટિયોમાં ગ્રોથ એટલે હું એમ કહીશ કે આખી દુનિયામાં જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં હોવી જોઈએ રેન્ટિયો દેશી. સો એ જ અમારો એમ છે કે દુનિયાના ખૂણે ખૂણે ગુજરાતીઓને રેન્ટિયો દેશી એ જ સેટિસ્ફેક્શનથી મળે, ચાહે એનું માધ્યમ કોઈ પણ હોય, પણ એમને એ આનંદ મળવો જોઈએ કે જે એમણે એમના નાનપણમાં કે વર્ષો પહેલાં લીધો છે. તો આ જ અમારે ગ્રોથની વ્યાખ્યા રહેશે. અને ફરીથી એ જ વાત કહીશ કે રેન્ટિયો ઇઝ 100% સેટિસ્ફેક્શન. હાઉ રેન્ટિયો વોઝ ઓર આઈ શુડ સે ઇઝ ડીલિંગ વિથ COVID-19 સિચ્યુએશન. જ્યારે મને એનો કહેવાનું હોય તો એમ કહીશ કે છેલ્લા 8 મહિનામાં દરેક જણે પોતાની સાથે સાથે એકબીજાની પણ ખૂબ જ કેર કરી છે. એનું કારણ એવું કે રેન્ટિયો એ એક ઓર્ગેનાઇઝેશન કે મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ નહીં, તો ઇટ ઇઝ વન ફેમિલી સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ લેબર ટુ ઇટ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પાર્ટનર. દરેક જણે બીજાનો ખ્યાલ કરીને આ પરિસ્થિતિને હેન્ડલ કરી છે કે એના ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન ઓછા સમયમાં આપણે સારામાં સારી ક્વોલિટી કેવી રીતે આપી શકીએ, જલ્દી કેવી રીતે આપી શકીએ, આપણા કન્ઝ્યુમરને કેવી રીતે સેટિસ્ફાઈ કરી શકીએ, એ વિચાર દરેકે કર્યો છે. મને આજે અહીંયા કહેતા આઈ ફીલ પ્રાઉડ ઓફ ઇટ કે અહીંની એક રીત છે, રિચ્યુઅલ છે કે વેન લેબર્સ સ્ટાર્ટ ધેર વર્ક, બિફોર દેટ દે ડુ પ્રેયર. અને એને લીધે દરેક જણે પ્રેયરમાં ઇન્વોલ્વ થતું હોવાને લીધે લેબર્સથી લઈને એડમિનિસ્ટ્રેશન સુધી બધા, એને લીધે એક ફેમિલીની ભાવના છે, એક ફિલિંગ છે કે વી આર વન ફેમિલી. તો આ 8 મહિનામાં કોઈએ કોઈની કેર કરી કે નહીં, દરેકે એકબીજાની કેર કરી. માટે આ સિચ્યુએશન ખૂબ જ ડિફિકલ્ટ હતી, છતાં પણ ઇટ વોઝ વેરી ઇઝી ટુ મેનેજ. અને એક પણ પોઝિટિવ કેસ આવ્યા વગર વી કુડ સેટિસ્ફાઈ અવર કસ્ટમર. અને એ એટલા માટે જ થયું બિકોઝ રેન્ટિયો ઇઝ વન ફેમિલી. વોકલ ફોર લોકલ ઇઝ a very good initiative by Chef Smith Sagar with Shemaru Gujarati, કે જ્યાં નાના ઇન્સ્ટિટ્યુશનને, લોકલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન કે જે લોકો 1 કે 2 સ્ટેટમાં ડીલ કરે છે, એ લોકોને એક પ્લેટફોર્મ મળ્યું. એ લોકો એટલા જ પ્રોફેશનલી, એટલી જ સારી રીતે પોતાની કંપનીને, પોતાના ઇન્સ્ટિટ્યુશનને મેનેજ કરે છે, પણ એ લોકોને અત્યાર સુધી કોઈ પ્લેટફોર્મ નહોતું પોતાની જાતને પ્રેઝન્ટ કરવા માટે. તો એ લોકોને આજે એક પ્લેટફોર્મ મળ્યું. દેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ એ લોકોને અત્યાર સુધી જગ્યા નહોતી, કારણ કે દે વેર નોટ દેટ બિગ મોટી કંપનીઝના જેમ, પણ દે આર મેનેજિંગ દેર બિઝનેસ સો વેલ. અને એ લોકો પણ એ લોકોના કસ્ટમરનું એટલું જ ધ્યાન રાખે છે. આ લોકો સુધી પહોંચાડવાનું, કમ્યુનિકેટ કરવાનું. આઈ ફીલ દેટ for Gujaratis, this is the best platform we have ever got. तो ये थे हमारे साथ मिस शीतल मैम जो रेडियो फूड्स के डायरेक्टर है. और दोस्तों, दर्शकों के अपने क्वालिटी और हेल्थी प्रोडक्ट से ग्राहकों के साथ जुड़े रेडियो फूड्स के
मिस्टर नीरव जो रेटियो फूड्स के डीलर है उनसे मुलाकात करते हैं। टेस्ट में बेस्ट, न्यूट्रिशन से भरपूर, क्रिस्पी क्रंची सबका फेवरेट, ढेर सारी फ्लेवर्स में उपलब्ध। दुनिया ने सराहा इंडिया का अपना मनियास खाकरा एंड स्लिम बाइट्स। गो एंड ग्रैब योर फेवरेट फ्लेवर नाउ। इंडिया की नमकीन यानी गोपाल नमकीन, टेस्ट क्वालिटी में नंबर 1, हर एक इंडियंस के लिए लंबी और बेस्ट प्रोडक्ट रेंज, फुली ऑटोमेटिक प्लांट में बनी हाइजीन प्रोडक्ट्स, प्योर क्वालिटी, टोटल फेथ, गोपाल नमकीन। चलो बेटा डायपर पहन लो। बेटा डायपर पहन लो। अरे अचानक इसको क्या हुआ? डायपर देखकर रोने लगा। अभी आज के बच्चों को पुराने जमाने का डायपर पहनाओगी तो रोएगा ही ना। बेटा ये देखो, किडी सॉफ्ट बेबी पुल अप डायपर। बच्चे की हेल्थ और ग्रोथ का चौकीदार, किडी सॉफ्ट बेबी पुल अप डायपर्स। हम इस वक्त मौजूद हैं रेटियो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के 50 साल पुराने डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर नीरव सर के यहाँ से। चलिए मिलते हैं मिस्टर नीरव सर से। हाय। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम, थैंक्स। प्लीज। तो रेटियो फूड से और आपकी कब से शुरुआत हुई? ये जो हमारी फर्म है जी। दामोदर मुलजी, ये दानापीठ मेन बाजार है, वहाँ पे सिचुएटेड है। जी जी जी। और 50 साल पहले मेरे दादाजी यहाँ पे आए थे। ओके। और हमारे जो रेटियो कंपनी के सीईओ है श्री विपिन भाई चोखावाला, जी 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 जी, वो पूरे बाजार में घूमे जी, कि किसी को हमको एजेंसी देना है, किसी को हमको इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना है। पर इसका क्या था कि क्वालिटी वाइज इसका दाम और दालों से ज़्यादा था, इसलिए कोई ये लेने के लिए तैयार नहीं था। जी जी जी। और लास्ट में वो थक के शाम को हमारे वहाँ आए तो हमारे दादाजी एकदम उनको देख के इम्प्रेस हो गए कि नहीं, इनके साथ हमको काम करना है। अच्छा। और फिर उन्होंने उनसे बातचीत की। वो दादाजी इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जो भी दाम है पर आप क्वालिटी प्रोवाइड करते हो तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी सफ़र है वो उस टाइम बिफोर 50 ईयर्स 50 साल पहले ये सफ़र इस तरह स्टार्ट हुई और हमने ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप 50 साल पहले ली। और आज मैं नीरव ठकरार 3rd जनरेशन आज इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। सर 50 साल बहुत ही लंबे समय होता है और इन टाइम पे मेरा ये मानना है कि कितनी सारी ब्रांड्स आ गई। राइट। और आपने कहा कि 3rd जनरेशन और फिर भी आप रेटियो प्रेफर करते हो, क्यों? कोई रीज़न क्या है कि रेटियो फूड्स? सर जब से हमारी यहाँ शुरुआत हुई रेटियो की, तब से लेके आज तक जो क्वालिटी मेंटेन करते हैं ये लोग, उसका जवाब नहीं है जी। ये दाल लिटरली लेबोरेटरी में टेस्ट होके, उसका हर एक बैच टेस्ट होके यहाँ पे आता है और जब कंज्यूमर यहाँ से हमारे पास से ये दाल लेके जाता है तो उनकी जो खुशी होती है, उनका जो फीडबैक होता है वो लाजवाब होता है। जैसे ही हमारी दाल लाजवाब बनती है ऐसे ही उन लोगों का फीडबैक भी इतना लाजवाब होता है कि हम सुन के ही खुश हो जाते हैं कि नहीं, ये क्वालिटी, इससे अच्छी क्वालिटी कोई ब्रांड दे ही नहीं सकती है, क्योंकि वो लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना जानते ही नहीं है। सर आज का जो समय है, जैसे देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट इम्यूनिटी, हाइजीन। तो रेटियो फूड्स, इनका क्या रोल होता है? हम फार्म से ही स्टार्ट करते हैं। जी जी जी। तो रेटियो का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये इट्स 100% देसी। अच्छा। वो जब फार्म से निकलती है, वहाँ से फैक्ट्री तक पहुँचती है और जो इसका प्रोडक्शन है वो
पूरा का पूरा प्रोडक्शन एक बार ये मशीन के अंदर गई तो डायरेक्ट पैक होके निकलती है, सो इट्स ऑलमोस्ट अनटच। तो इसका हाइजीन 100% हाइजीन मेंटेन करते हैं ये लोग, और जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसके 7 स्टेप्स है, वो स्टेप्स के पूरा उसका क्वालिटी कंट्रोल होके ये मार्केट में आती है, और इसीलिए इसका दाम दूसरी दालों से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी इसके ऊपर हमको गारंटी देती है 10 महीने की। अच्छा, ये 10 महीने की गारंटी के समय के दरमियान अगर दाल में कुछ भी प्रॉब्लम आया, अगर कंज्यूमर को छोटी सी भी कंप्लेन है, तो कंपनी ये पीस टू पीस रिप्लेसमेंट की गारंटी देती है। वाह, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ रेटियो। राइट। सर, एज अ डीलर और कंपनी के साथ आपका रिलेशन कैसा रहा? इट्स माइंड ब्लोइंग। वी आर ग्लैड कि आज मैं 3rd जनरेशन पे भी हमारा रिलेशन मेंटेन हो रहा है, और वी आर लाइक फैमिली। हम फैमिली की तरह डील करते हैं, भले ही ये कॉरपोरेट लेवल की जो बात है, पर हमारा जो रिलेशन है वो फैमिली की तरह है, और जो रिलेशन फैमिली की तरह हो वही रिलेशन आगे जा सकता है और इतने सालों तक बरकरार रह सकता है। जी। तो उसी तरह रेटियो कंपनी का और हमारा नाता जो है वो भी एक फैमिली की तरह है और 50 सालों से मेंटेन है। तो उसका एक रीज़न है कि कंपनी से हमको जो सपोर्ट मिलता है वो ज़बरदस्त है। हम कुछ भी कंपनी के सामने प्रस्ताव रखे कि ये स्कीम करना है, ये करना है, मोटिवेशन प्रमोशन के लिए ये करना है, तो कंपनी कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखती है, हमको 100% सपोर्ट देते हैं। और अगर हम कहते हैं कि ये कंप्लेन यहाँ से आई हुई है, तो वो लोग उसका तुरंत ही उसका सॉल्यूशन लाके हमको दे देंगे कि भाई आप कोई बात नहीं है, जो भी आपके लेवल पे ठीक लगा आप कर दो। और उसका मेन मोटिव यही है कि कंज्यूमर खुश रहना चाहिए। इसीलिए कंपनी क्या है कि 25 किलो से लेके 1 किलो तक का पैकिंग अवेलेबल मार्केट में किया हुआ है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी रिटेलर है वो कोई कंज्यूमर को चीट नहीं कर पाएगा। जी। तो 1 किलो लेने वाला जो कंज्यूमर है वो भी कंपनी के साथ अटैच रह सकता है। तो वी आर वेरी स्पेशलिटी भी है वो एक स्पेशलिटी है। हाँ, रेटियो इज लाइक अ पैकिंग मास्टर। अच्छा। सभी दालों में सबसे पहली कंपनी ये है जिन्होंने ये छोटे पैक स्टार्ट किए। हमारी कंपनी को देख के सभी और ब्रांड्स ने पैकिंग स्टार्ट की है। अच्छा, यस। तो सर, वोकल फॉर लोकल के इनिशिएटिव के बारे में हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? वोकल फॉर लोकल से हमें ये सीख मिलती है जी कि देश का पैसा देश में रहेगा, जी, देश के लोगों को काम मिलेगा, और ये सब देसी वस्तुएं यूज़ करने से हमारे देश की उन्नति और प्रगति होगी। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो मेरे साथ थे मिस्टर नीरव सर, जो रेटियो फूड्स के साथ 50 ईयर्स से भी ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो बस ऐसे ही मिलते रहेंगे एक नए सफर में। तो आप देखते रहिए वोकल फॉर लोकल, एंड रिमेंबर, बी वोकल फॉर लोकल।